Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study chapter number 12, perimeter and area. Practice set number 47 we are going to complete. So in today's video we will be doing two formulas, that is total surface area of cuboid and total surface area of a cube. So we all know what is a cuboid and a cube. So the difference between a cuboid is that it is having rectangle faces and cube is having square faces. Okay, so according to those, the formulas are also different. Total surface area of a cuboid is equal to 2L into B plus B into H plus L into H. Whereas total surface area of a cube is 6 into side square cube, because it is having a square shape. Okay, so all the sides are going to be same. Therefore, it is going to be 6L square. Side means L. So let's start with the first question, that is find the total surface area of a cube having the following sides. So the side is been given 33 centimeter, not 33 centimeter, and you all have to find the total surface area of a cube. So I have written the formula, that is the total surface area of a cube is equal to length square into 6. Okay, so in place of 6 you all have to place 6 only. L के जगह पे लगाना है 3. 3 square you all have to take first, that is 3 square is 9. So 6 9s are 54, and because it is an area, so centimeter square. Okay, remember to put the units properly. Alright, now let's move on to the second sum, that is 5 centimeter. So again, you all have to first write the formula and then place the value. 6 into L is supposed to be 5. So 5 ka square first you all have to take. So 5 square is 25. 6 into 25 is going to be 150 centimeter square, because it is an area and centimeter is been given. If meter is been given, you all have to write meter square. Now next is 7.2 meter. So the total surface area of a cube is equal to 6 into L square. Formula I have already written. So 6 into L is 7.2 square. Up 7.2 square, how you all have to remove? You all have to remove it in this way. Okay, simply multiply it and you will be getting 51.84. Okay, I'm directly writing the answer, children. You all have to multiply. It is simple multiplication. First multiply and then you will be getting this answer. Okay, this you all have to solve it properly. Now, so 6 into 51.84, again you all have to multiply it in this way. Okay, now simple multiplication and then you will be getting 311.04 meter square. So 311.04 meter square. I'm not solving multiplication because it is simple multiplication. You all will be able to do it. If you all are not able to do it, please let me know in the comment section. I will make a separate video explaining the multiplication sums. Again, a decimal point sum has been given for the fourth one, 6.8 meter. So first write the formula, that is total surface area of a cube is equal to 6 into L square. So 6, and what is L? L is side, that is 6.8 square. Okay, so first you all have to take the square by multiplying the same number twice. Okay, so when you multiply it, you will be getting 46.24. Now this is simple multiplication, children, so no need to explain. 46.24 into 6, you all have to multiply this in this way. Okay, then you will be getting 277.44 meter square. If you all are not able to get the answers, do let me know in the comment section, children. Now let's solve the next sum, that is the fifth one. So again a decimal point number has been given. So formula I have already written, 6 into L, that is 5.5 square. So 6 into, first multiply it in this way, twice you all have to multiply the same number in order to get the square root. तो इसको multiply करने पे आ जाएगा 30.25. Alright, so now multiply this
again you will be getting 181.5 meter square. Alright, now let's move on to the next question, that is find the total surface of the cuboid of the length, breadth and height are being given below. The first sum is 12 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter. Okay. Now length is 12 centimeter, breadth is 10 centimeter, height is 5 centimeter. So the total surface area of a cuboid, this is the formula which I have told you in the starting only. Now place the value. 2 you all have to write first, then it is L. L means 12. 12 into, यहाँ पे कुछ नहीं है, means it is a multiplication sign over here. Okay, so 12 into B. B कितना है? 10. Okay, underline it and keep. Then B is 10 into H is how much? 5. उसको underline कर लो. Then again plus sign L into B. So L is 12 into H, sorry 5 centimeter. तो write it in this way. इसको भी underline कर लो ना. अब underline क्यों करना है? Because it will not get mixed. You all will understand that first multiplication and then you all have to add it. So 12 into 10 is going to be 120. 10 into 5 is going to be 50. 12 5s are 60. अब simple इसको add करना है by arranging it in this way. Okay. ऐसे add कर लेना है. You will be getting the answer as 460. Sorry, not 460. I have already written the answer. That is why when you plus this, you will be getting 230. So 2 into 230. तो ये 230 कहाँ से आया? After adding all these three numbers. So अब when you multiply it, it is going to be 460 centimeter square. Centimeter square because we are finding the area. So the total surface area of a cuboid is 460 centimeter square. Now the second sum is 5 centimeter, 3.5 centimeter as breadth and 1.4 centimeter as height. So the total surface area of a cuboid, again write the formula. This you all have to learn by heart. Now place the values. L is 5 into B is 3.5. Underline कर लो. Okay, plus B into H. तो 3.5 into 1.4, underline it, plus 5 into 1.4. Okay, again underline it. Ab underline the numbers that you all have underlined, first multiply them. So multiplication again it is very easy. 3.5 into 5 ऐसे multiply करना है. 5 5s are 25, 5 3s are 15, 16, 17. तो 17.5 plus this you all will multiply, it is going to be 4.9 plus this you all will multiply, it is going to be 7.0. ओके, अब इसको ऐड करना है ना. एडिशन इन दिस वे यू ऑल हैव टू राइट. अब यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करने वाले हैं. दैट इज व्हाई आई एम अरेंजिंग इट एंड शोइंग यू ऑल हाउ टू ऐड इट. ओके, सो इसको प्लस करने पे ये आ जाएगा 14. देन 8 4 7 इज गोइंग टू बी 19. Okay, and 2. So in this way you all have to add it. Okay, so to arrange करना properly is important because अगर arrangement नहीं होगा बराबर से decimal point के नीचे decimal point तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आंसर में. Okay, now multiply it. Multiplication is also easy. I will show you how to arrange it, then multiply it, add a decimal point after a point. So there is going to be 58.8 centimeter square. Remember to place this in a proper way children. यहाँ पे आप लोग mistake कर लेते हो and then you will not be able to get the answer. So third sum I have already written. These are the measurements that they have given. Length, breadth and height. I have written it down according to the question. Formula I have written which is you all have to everyone has to remember this formula. So 2 into L कितना है? 2.5 into breadth is 2. Underline it. Plus B is 2 into 2.4. Again underline this. Plus 2.5 into 2.4.
इसको भी अंडरलाइन कर लो. ओके, नाउ सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लो. व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू यू विल बी गेटिंग एज 5.0. मल्टीप्लाई दिस, इट इज गोइंग टू बी 4.8. मल्टीप्लाई दीज टू, आंसर इज गोइंग टू बी 6.0. अब इसे प्लस कैसे करना है? अगेन आई विल अरेंज एंड शो यू. 4.8, 6.0, इसको ऐसे अरेंज करना है. ओके, सो यू विल बी गेटिंग इट एज 8.15. So 2 into 15.8. When you multiply it, the answer is going to be 31.6 meter square. इसको multiply करना है. Alright, so the total surface area of a cuboid is 31.6 meter square. Now fifth sum I have already written. 8 is length, 5 is breadth, and 3.5 is the height of a cuboid. Formula you all have to write, compulsory it is, because half mark you will be getting for your formula. So length is 8 into 5 plus 5 into 3.5 plus 8 into 3.5. Okay, so this you all have to multiply. 5 8s are 40. Okay, 5 8s are 40 plus इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 17.5 प्लस व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इज गोइंग टू बी 28.0. तो अब इसको अरेंज कैसे करना है? सो इट इज़ वेरी इजी टू अरेंज. सी 40 कुछ नहीं है तो उसको 0 लगा दो, है ना. पॉइंट आफ्टर पॉइंट यू कैन ऐड 0. देन 17.5 28.0, इसको ऐसे प्लस करना है. ओके, सो व्हेन यू प्लस इट यू विल बी गेटिंग एज 5.15 plus 8. Okay, so 2 into 85.5. अब इसे मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लीकेशन इज अगेन ईजी, ओनली 1 digit इज देयर. 2 से मल्टीप्लाई करना है. इन दिस वे यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 171 meter square. Okay, now question number 2 is already completed now. Now, the next question is a matchbox is 4 centimeter long, 2.5 centimeter broad and 1.5 centimeter height. So, हमारे पास length है, breadth है, height है. Alright, so the total surface area of a matchbox. Matchbox कौन सा shape का होता है? It is rectangular in shape. So, you all have to write it in that way. Okay, the total surface area of a matchbox. तो हमें cuboid का formula लिखना है. cuboid का formula लिखने पे हमें जो हमने question number 2 solve किया था, in the same way you all have to write it. Alright, so this is going to be 2, length is 4 into 2.5 plus 2.5 into 1.5 plus 4 into 1.5. Okay, so इसे हमें अभी multiply करना है. When you multiply it, it is going to be 10.0 plus 3.75 plus 6.0. Okay, अब इसको अरेंज कैसे करना है? I will show you so that mistakes नहीं होगी while adding. So 3 will be coming over here, 75 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6.0. तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 लगा दो. ऑलराइट, सो ऐसे अरेंज करना है. तो अरेंज करने पे आ जाएगा 57.91. ओके, सो 2 into 19.75. इसे हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे हम लोग पहले भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी तरह हमें मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज गोइंग टू बी 39.5 centimeter square. So therefore उन्होंने क्या पूछा था? How much paper? In the question it has been given how much paper will be required to do so. मतलब हमें क्या करना था? हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें मैच बॉक्स को एक क्राफ्ट पेपर से हमें पेस्ट करना था. So how much paper was going to be needed? So therefore जो टोटल सरफेस था, अगर हमें किसी मैच बॉक्स को रैप करना है क्राफ्ट पेपर से तो हमें कैसे उसे रैप करना है वो आइडिया सबको है. So in that same thing you all have to use it over here and उसका एरिया जो है मैच बॉक्स का वो हमने निकाल लिया. दैट इज sorry, not 171, it is 39.5 centimeter था. Yes, centimeter square.
Okay, so the total surface area of a cuboid is 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यूबॉइड के जगह पे आप लोग मैच बॉक्स भी लिख सकते हो. All right, that is the total surface area of the cuboid matchbox, and therefore 39.5 centimeter square craft paper will be needed. Will be needed or required. All right, now let's move on to the fourth question. Fourth question, an open box of length 1.5 meter, breadth is 1 centimeter and height is 1 centimeter is to be made for use of a trolley for carrying garden waste. How much metal sheet will be required to make this box? तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है. सबसे पहले जो बॉक्स रिक्वायर्ड है उसका द इनसाइड एंड आउटसाइड सर्फेस ऑफ द बॉक्स आर टू बी पेंटेड. वो जो बॉक्स है उसे इनसाइड एंड आउटसाइड मतलब अंदर बाहर से उसे पेंट भी करना है विथ रस्ट प्रूफ पेंट. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंट? तो हमें उस पेंट का कॉस्ट भी फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 150 पर स्क्वायर सेंटीमीटर. तो सबसे पहले तो हमें जो बॉक्स है उसका एरिया फाइंड कर लेना है. सो देयरफॉर द टिन शीट रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स इज लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट. ओके, सो अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया. चेंज क्यों हो गया? बिकॉज जो बॉक्स है उसको ऊपर से लिड नहीं है, मतलब वो बंद नहीं है, ऊपर से वो खुला हुआ है. अगर आप लोग देखोगे जो वेस्ट कैरी करने का बॉक्स होता है वो हमेशा जो ऊपर का साइड होता है इट इज ओपन. दैट इज वाई हमें ऊपर का साइड नहीं लेना है. ओके, सो ये फॉर्मूला यूज करना है एंड देन इट इज गोइंग टू बी अगेन आई विल राइट इट इफ इट्स नॉट क्लियर टू यू ऑल बिकॉज वो बहुत साइड में हो गया. So I will write it over here. Okay, so length is 1.5 centimeter into 1 है ना. breadth is 1 plus 2 into 1 plus 2 into 1.5 into 1. Okay, so अब हम multiplication कैसे करेंगे? In this way. Okay, so 1.5 into 1 is going to be 1.5. All right, 2 into 1 is going to be 2. Sorry, ये मैंने गलत कर दिया अंडरलाइन. So this 2 into 1 is going to be 2. Then 2 into 1.5 is going to be plus 3 into 1. तो वो 3 ही हो जाएगा. Okay, so it is going to be 6.5 मीटर स्क्वायर. अब इसे कैसे अरेंज करना है यहाँ पे आप लोग एक लिख लो, एक स्टेप ऐड ही कर लो. इट इज गोइंग टू बी 3 into 1 is going to be 3. अब इसे डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखोगे? इट इज गोइंग टू बी 1.5. ओके, सो 2.0 3.0. तो आंसर आने वाला है ऐसे. ओके, 6.5 मीटर स्क्वायर. गॉट इट चिल्ड्रन? इसे ऐसे ऐड करना है. अब जो 6.5 मीटर स्क्वायर था दैट इज सपोज टू बी द टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6.5 मीटर स्क्वायर. ओके, अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ पेंट है ना. एंड द कॉस्ट ऑफ पेंट इज हमें अंदर बाहर से वो बॉक्स को कलर करना है. सो टोटल एरिया जो है जो हमने फाइंड किया है दैट इज टोटल एरिया इनसाइड एंड आउटसाइड. अब जितना बाहर रहेगा उतना ही अंदर रहेगा. बराबर है कि नहीं? दिस इज द स्मॉल लॉजिक यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड इनटू रेट. ओके, सो कॉस्ट अभी हमें फाइंड करना है. कॉस्ट ऑफ द पेंट, उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है. ओके, टोटल सरफेस एरिया मतलब अंदर से जितना एरिया रहने वाला है उतना ही बाहर का रहने वाला है. मतलब 6.5 अंदर 6.5 बाहर. सो 6.5 प्लस 6.5 इंटू रेट कितना दिया था? 150. सो सबसे पहले तो हमने इसको ऐड कर लेना है. दैट इज गोइंग टू बी 13. ओके, 13 इंटू 150. सो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लीकेशन अगेन बहुत इजी है इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ. सो ₹1950 इज योर अमाउंट. देयरफॉर 6.5 मीटर स्क्वायर ऑफ metal sheet
इज रिक्वायर्ड, उसको मतलब वो बॉक्स बनाने के लिए इतना एरिया का मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is rupees 90-50. Okay, I hope this exercise is clear. See you in the next video. Till then, take care. Bye.